24 सितंबर को इस रेस ट्रैक पर दौड़ेंगी 22 बाइकें और ये कोई नॉर्मल बाइक्स नहीं, सुपर बाइक्स हैं जो यहाँ इंडिया में दौड़ेंगी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनकट की जनता, स्वागत है आपका टू इंडिया, टू मोटो जीपी भारत। Moto GP, it can't get better than this. Yeah, man, and Moto GP Bharat is here 22nd, 23rd, 24th. अगर आपको लाइफ में कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करना है तो जाके टिकट ले लो। वैसे मेरे को सुनने में आया है कि टिकटें भी अभी निकल रही हैं धीरे। जितनी ज़्यादा हम बातें कर रहे हैं उतनी ज़्यादा टिकटें निकले आएंगे, निकलते जा रही हैं। बट आपका ये बाइक के लिए ये प्यार, रोडीज में तो हमने आपको देखा था, बट उससे पहले यू रिमेंबर योर फर्स्ट टाइम जब बाइक पे बैठे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या था? You know, I was sitting on a bike when I was very young, man. I was 2-3 years old, and all my dad, my chachas in the army, and everybody has motorcycles, even the DR bhaiya. So I was so enamored by the motorcycle that I was like, yeah, throughout my life I want to be riding bikes. So much so that one of the decisions of going for the first season of Roadies was that I wanted to win that charisma at that time. Yes. And I told my dad that when I was going to the army, when I get out of the academy, the money that you get as stipend, I will pay for this bike. And as luck would have it, nobody knew what Roadies was. The first adventure show, the winner will get a charisma. So that's why I went for it. And over the years, I've had many bikes, but many experiences. I've ridden in different countries, not just because of a show, but I've gone for MotoGPs. I've gone to Italy to ride. I've done some motocross, and it's become a part of what I do actually. And biking as a community, the brotherhood has also grown a lot, and I'm very happy that I'm part of it since a long time now. So अभी आपके गैराज में कितनी बाइकें हैं और उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? I have the Charisma from the beginning. Wow. I have my first bike, which my dad got me, which was a Splendor. I have a Royal Enfield 500 Classic, Yamaha XJ 900, which is a 96 model. I have I have a Ninja ZX7. I had a Ducati Monster which I sold, and I had a Gixxer 600 which I also sold. I kept different bikes because I couldn't have too many at one time. I have a KTM Duke, and now my favorite bike ever is the Ultraviolet F77, which is an electric motorcycle, and that's my favorite bike. I ride it all the time. I have it in Bombay, and I just got it like a couple of months ago. Wow, congratulations. So thank you so much, and I'm trying to so that is the motorcycle that I love the most, the Ultraviolet F77, Indian bike, but a global phenomena. That's what I feel. अच्छा, मोटो जीपी भारत सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में एक सवाल था, बहुत जेन्युइन सा था। भारत में हो रहा है मोटो जीपी, लेकिन ना भारतीय बाइकर दिख रहे हैं। हाँ, बट ऐसे तो F1 में भी होता है। हाँ, F1 भी भारत में होता है, बट so it'll take time ना, because ये इवेंट यहाँ पर होगा। सोल्यूशन ये नहीं है सर, जब ये इवेंट्स यहाँ पे होंगे तब लोगों को पता लगेगा, तब आगे एकेडमीज बनेंगी, तब आगे स्पॉन्सर्स आएंगे, तब फिर वो स्पोर्ट का बढ़ावा होगा, राइट? पहले तो फुटबॉल प्लेयर्स भी नहीं थे हमारे यहाँ पे, अब देखो लीग शुरू हो गया। सो जो वो लीग्स यहाँ पे हुए तो फुटबॉल, एक कबड्डी का लीग शुरू हुआ तो और कबड्डी बढ़ गई, तो अभी मोटो जीपी आया है तो ही ये स्पोर्ट आगे बढ़ेगा। एंड इट टेक्स टाइम है, बट हमारे देश में इतने ज़्यादा मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं, क्योंकि इतने लोग कन्वेंस के लिए भी, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट जस्ट पैशन ड्रिवन, तो वो लोग भी जब देखेंगे तो वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो रोज मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिर अरे मोटरसाइकिल का रेस भी होता है। तो आई थिंक ये जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रचार होगा, उतने लोग निकल कर आएंगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a normal day riding maybe versus when you are riding on the track? Does the mindset change? क्या approach अलग है? You can't, आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और आप फिर अपने स्कूल के लिए मैच खेल रहे हैं, या फिर आप तो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ये नहीं कि मेरी बैटिंग है, मेरा बैट है, मैं निकल रहा हूँ। तो वही होता है, आप नॉर्मल जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो आप चला रहे हैं इधर से उधर जाने के लिए। आप रेस ट्रैक पे हैं तो इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट। टेक्निकलिटीज हैं, यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू फोकस, और किसी के बारे में सोच नहीं सकते। अब नॉर्मल चला रहे हैं, अभी उसको पिक करना है, उधर से उधर जाना है, काम वाम, इधर कुछ नहीं होता है। एंड यू आर एट अ स्पीड व्हिच इज unthinkable, you can't think of anything else, and it's a lot of muscle memory that comes in. Muscle memory तभी होगी अगर आपने उतनी प्रैक्टिस कर रखी होगी। ये सोच के नहीं कर सकते अब मैं राइड जाऊंगा, नहीं, वो टाइम ही नहीं है। 360 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे हैं आप, राइट? ये छपा होता है, ट्रैक्स, अलग अलग ट्रैप्स इनके दिमाग में छपे हुए हैं, वो उनको पता है कि 3 सेकंड हो गए, वो लेफ्ट टर्न आने वाला है, मेरे को निकलना है। और तो ये अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ बाइक चलाने जैसा है, स्पोर्ट हर स्पोर्ट की तरह इसमें शिद्दत, मेहनत, डिसिप्लिन सब कुछ लगता है। बिल्कुल। फोर्ड वर्सेस फरारी एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग है,
कि देयर कम्स अ मोमेंट जब आपको ना शोर सुनाई देता है ना आपको कुछ दिखाई It's देता almost like tunnel vision. है। यस, yeah. टनल विजन। कभी वो टनल विजन आपने एक्सपीरियंस किया? A lot of times. और जब a आप lot. चला रहे होते हो तो जहन में क्या चल रहा होता है? Not just on the motorcycle. Every time I played basketball, every time I competed in any task, anytime I was doing a task, because if you're not focused, if there's no tunnel vision, I would only see things that I have to do. I have to jump, I have to catch that, then I have to go, and it was always tunnel vision. If you are, अगर आप इधर से उधर देख रहे हो, तस से मस हो जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा, it's not worth it. मैं बंजी जंपिंग वाले मजे या करने नहीं जा रहा था। अब ना एवरी टाइम आई वेंट मेरे को चोट लग सकती थी। इवन व्हेन आई डिड स्टंट मेनिया, देयर लॉट्स ऑफ दी स्टंट्स। ये तो आप स्टंट्स में यू आर जंपिंग ऑफ अ रैंप, यू हैव टू लैंड, वहाँ पे विस्फोट हो रहा है, आपको नीचे से स्किड करते हुए निकलना है। ऑल दोस थिंग्स, if there was no tunnel vision, you wouldn't be able to do it. So I had to be very focused. It was not कि oh क्या मजे आते होंगे उसके। It was serious. Preparation was there, planning was there, protection was there, rehearsing was there, practice was there. It was, yeah. So you have to have tunnel vision to achieve something, is what I feel. आप एक्टिंग भी करते हो, एंकरिंग भी करते हो, बाइक एंथुजियास्ट भी हो, उसके अलावा आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, एंड इतने सारे रोल्स, एंड ये स्नीकर हेड। क्विक क्वेश्चन, कितने स्नीकर्स हो गए? हैं थोड़े बहुत। अब काउंट करना छोड़ दिया? हाँ, because after a point then, I'm trying to get to a number which is lesser, because I have too many and I've given away 500 sneakers in the last couple of years. So yeah, अभी that process is on. इतने सारे रोल्स, कहते हैं ना one life many roles, ट्रेन कैसे करते हो? How does Rannvijay train himself? My aim is to be in one role. I want to be very good, which is to be a good human being. So I think if you concentrate on that, then everything else follows. I want to be a good son, good husband, good parent, and good friend, brother. So if you concentrate on that, then everything else that you're doing is to have resources for the other things that you want to do in your life. मेरा आप करते क्या, आप इतनी सारी मैं कोशिश करता हूँ यार। I'm just trying to do different things जिसमें मेरे को मजा आता है, किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी में मदद कर सकता हूँ, कहीं मेरी मदद हो जाए। तो कॉन्शियस थॉट रहता है कि होती जा रही हैं चीजें? नहीं, कॉन्शियस थॉट तो रहता है, ऐसे होती जाती वाले पे घर पे बैठे रहते हैं। You have to, like I had to be here, I had to physically come here, get in touch with somebody to ride. It doesn't happen to you. You can't just happen to be on a racetrack, right? There is a kabaddi league that I'm part of, which is called the Real Kabaddi League. I am interested in sports. I am fit. That is why I'm part of that. It's something that I've put it out there that this is what the kind of things I want to do. I own a football team. I do leagues of sports. That's why another person who's doing a league wants my expertise or wants me to be part of it, because he feels like I bring that credibility. Absolutely. जो चीजें मैं नहीं करता हूँ वो चीजें मेरे पास नहीं आएंगी. So because I'm a fit guy, I ride cycles across the whatever, right? तो ये चीज जो है ना, लोग कहते हैं कि यार मैं पैशनेट हूँ ट्रैवल के बारे में, क्यों नहीं मेरे पास कंपनीज आ रही जो मुझे ट्रैवल करा रही है? क्योंकि आप बिना कंपनीज के आने, बिना एजेंडा के ट्रैवल करते हुए नहीं दिख रहे। जब आप वो करते रहेंगे ऐसे पैशन बिना एजेंडा के करते रहेंगे, चीजें आती रहेंगी। सो दैट्स you have to do it. Yeah, absolutely. So before we wrap up, one reason why everybody should watch Moto GP Bharat. First of all, because it's happening in India. Second of all, these are the best of the best across the world. They're competing to be champions. This is happening in India. It'll be very exciting. Adrenaline किसी को पसंद है तो यहाँ पे आके मजा आना है। वैसे भी entertaining भी होगा. And Friday, Saturday, Sunday, you will experience something that you have never in your own country. So why not? Come support the Indian MotoGP, which is called Moto GP Bharat. All right, that was Rannvijay. I am Badshah. आप देख रहे हैं Uncut. Before we wrap up, एक बार रोडी सल्यूट हो। अब क्या रोडी सल्यूट? तू करना रोडी सल्यूट। एक बार इनको तो बंद। मेरे को तो अलाउड नहीं, अब तो मैंने छोड़ दिया रोडी। अरे इनके पीछे से रोडी सल्यूट। All right, that was Rannvijay. Do watch Moto GP Bharat 24 September, Buddh International Circuit.